अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज इस टॉपिक पे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ, वो है रिलेटेड टू द मूवीज़ द दुनिया डिसेप्शन पार्ट 1 द मूवीज़। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे यही रेज होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अडिक्टेड टू द मूवीज़, व्हाट आर दे वॉचिंग? सो लेट्स फाइंड आउट विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। The masses are completely addicted to the movies, Hollywood, and most people don't even know what they are watching. What if we told you that all the modern top-rated mainstream movies, and we mean all, are about the devil or the Antichrist or Jesus Christ as the Savior, or just about the jinn in general? It's the story of either the return of Christ or just a movie about the devil Iblis himself and his followers. Too impossible to believe? We are talking about the current movies, ever since Walt Disney's first movie Snow White up until now. Movies have changed. Suddenly we are being prepared for the Dajjal, the Antichrist. And at the same time we are being numbed down to liking the devil, and we don't even know it. Unbelievable? Wait and see. This is part 1 of the movies, a segment of the Dunya Deception series, and in this episode we will show you the storyline of movies like you've never seen before. We will show you the signs. Let's start at the beginning. Snow White and the Seven Dwarfs. Snow eats a poison apple. It could have been any fruit, but it had to be an apple. The apple is symbolic of the fruit that Adam and Eve ate after being tricked by the devil. The first ever Disney movie had to have an apple as the fruit, and it had to be a fruit that poisoned Snow White. The mirror on the wall. Ever heard of mirrors being a doorway into another dimension? Who do you think the mirror is? It's a jinn. Snow White dies and comes back to life. In other words, she is resurrected, just like Jesus in Christianity. Let's look at an obvious one next. The Matrix trilogy. Neo, anagram for the One. He is the Jesus character. He is a savior. The whole world is a prison, everyone is asleep, and the followers are awake. Not to mention his partner's name, Trinity. It's obvious. Who do you think the agents are? They move in and out of everyone, shapeshifters. They are the jinn. And Agent Smith? Why Smith? His name starts with an S, just like Satan. You think it's a bit of a stretch? We will show you. Wait and see just how many S's there are in every movie. So Agent Smith is known as Neo's opposite. So the opposite of Jesus, as in the Antichrist figure. Smith takes over the whole world just like the Antichrist will. Neo dies for mankind just like Christians believe Christ died for mankind. So where is the resurrection? What's the name of the fourth Matrix movie that recently came out? The Matrix Resurrection. The Lion King. Scar, Satan. Simba is the savior. He leaves and everyone thinks he's dead. He talks to Mufasa in the sky as the godlike figure. In the second Lion King there is a song, literally they sing, "He lives in you." What do you think they are singing about? God. Simba returns as the king and defeats Scar, the lion with the one eye scratched. So here is the return of the king scene. The Lord of the Rings. The orcs, what do you think they represent? The jinn. And who do they follow? Sauron, S for Satan. And who else? Saruman, again an S. The elves represent the angels. Lord Elrond, the leader. The word El literally means God. But the most obvious clue is the Lady Galadriel. Who do you think she is? What does the name Galadriel sound like? That's right, Gabriel, Angel Jibril alayhi salam. Aragorn is the savior, the king figure. He dies and comes back to life. The third movie is literally called The Return of the King. So when Christ comes back to fight the Antichrist.
The one ring to rule them all represents the one world order. And most obviously, by now you would have guessed that the one eye of Sauron is obviously the Antichrist, the one-eyed Dajjal. The Avengers. All of the superheroes represent the savior. Isn't there a mass resurrection at the end of the movie? Thanos represents the false god from Greek mythology known as Thanatos, the Greek god of death who carries souls into the underworld. Thanos is obviously the devil, an antichrist figure in these movies. Thanos wants a new world order. He wants to wipe out half of humanity, just like the depopulation agenda of the Antichrist. Most movies merge the devil and Antichrist characters together, as you will see throughout. You will also see the savior character is in reality the devil. The devil symbology is always there. So basically, the devil wants to be everywhere, every character in every movie. The devil's favorite symbol is a lightning bolt. Who kills Thanos? Thor, another false Greek mythology god. What's his power? Thunder and lightning. Iron Man is the main savior in these films who sacrifices himself for the whole of mankind the second time that Thanos dies, just like Jesus sacrificed himself for mankind as the Christians believe. The 6 Infinity Stones of creation represent the 6 days of creation. And what is the first episode of the Avengers series, The Falcon and the Winter Soldier, called? New World Order. And the name of the last movie? Endgame. It's their way of saying the Dajjal is coming. Thor. Savior character represents Christ and the devil at the same time with his lightning power. His brother also, called Loki, god of mischief. The devil loves using names such as Lucifer, Luke, Lucas, Loki, Lucius, Luca, and even female names like Lucy and Lucille or Lucinda. He also uses the name Nicholas or Nick, like Little Nicky, and even Nickelodeon. So watch out for these names. And obviously he likes any name starting with S for Satan. The whole film is about the devil as a savior character. All the Greek gods that we know of, all of them are the devil. He wants to be everywhere. You will see the signs everywhere. Surtur, Satan. That's an obvious one. Aquaman. He's like Poseidon, another Greek mythology, god of the sea. We know the devil has his throne on the water. Poseidon has a pitchfork weapon. Have you seen that image of the red devil? What is he holding? Again, another movie about the devil as a savior. His name is Arthur, like King Arthur. Another Return of the King film. You will notice that they always seem to kill off the godlike figure in movies. So Mufasa in Lion King, Odin in Thor, and Dumbledore in Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter is the savior character who dies and is resurrected. Voldemort is the Antichrist figure with the snake as his last Horcrux. A snake always symbolizes the devil. He tries to take over the world and is defeated by the savior, who obviously has a lightning bolt as a scar on his forehead, which also reminds us of the mark of the Dajjal, or the mark of the beast, as the Christians say it. The whole film is about magic. Narnia, the Lion, the Witch and the Wardrobe. Sons of Adam and daughters of Eve. The lion, who is their leader, sacrifices himself and gets resurrected, returns and defeats the evil witch. These are just some of the movies out of the many with this storyline. We have more movies for you next time on the Dunya Deception series. Stay tuned and stay alert. The signs are everywhere. This is a really very eye-opening lecture. सबसे पहले तो I would like to give a credit to this channel, because this channel is doing very great work, amazing work. Yes, मतलब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो जिस मूवी की बहुत ज़्यादा इवन जो बच्चे हैं वो भी फ़ैन हैं, तो ऑल ओवर जो यहाँ पे कहने का मतलब है जितनी भी मूवीज़ है, लाइक मैट्रिक्स है, वॉल्ट डिज्नी की जितनी मूवीज़ है, सारी मूवीज़ जितनी भी है ना, सब कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा है. वो एजेंडा यही है कि वो एंटी क्राइस्ट को शो करते हैं.
और इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट वी आर फीडिंग टू आवर ब्रेन। एक्चुअल में जो हम अपनी ब्रेन को फीड कराते हैं, जैसा हम फीड कराते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जैसे ग़िज़ा आप अपनी बॉडी को देते हैं वैसे ही आपकी बॉडी होती चली जाती है। जितनी अच्छी ग़िज़ा बॉडी को देते हैं उतनी अच्छी बॉडी होती चली जाती है। जितना अच्छा ज़िक्र रूह को देते हैं उतनी ही अच्छी रूह और और ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है। उसी तरह से जैसा आप कंटेंट अपने माइंड को फीड करा रहे हैं, ब्रेन को फीड करा रहे हैं, तो वैसा ही आपका माइंड होता चला जाता है। उसी वे में आपका जो माइंड है डेवलप होता चला जाता है। एंड देन यही वजह है जो लोग जो है एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ हैं और क्या इस्लाम और दीन से बहुत ज़्यादा दूर है। लिटरली मतलब इस वीडियो ने मेरी आंखें खोल के रख दी। दिस इज़ अ कम्प्लीटली आई ओपनिंग वीडियो। एंड एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है कि जितने भी जो क्रिश्चियनिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, इन रिलीजन को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है मूवी में। जैसे कि ये जो मूवी है स्टार्टिंग में स्नो वाइट मूवी है, उसमें जो दिखाया गया है कि जो उसको पॉइजन दे दिया जाता है एंड देन उसको जो भी उसमें पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है वो सेम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, जो कि क्रिश्चियन मानते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन को लगता है, जैसे क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ा दिया गया था, बट हम मुस्लिम्स के कुछ और बिलीफ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उठा लिया था, ठीक है ना। और तो मतलब कहीं ना कहीं ये हर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। एंड इसमें जितने भी नेम यूज़ किए गए हैं ये कहीं ना कहीं और सेटन के सारे नाम ऐसे यूज़ किए हैं, जैसे कि सेटन, साइरस और बहुत सारे नाम। एंड जितने भी नेम यूज़ होते हैं एंटी क्राइस्ट के लिए, सेटन के लिए, वो सारे ऐसे यूज़ किए जाते हैं। इसमें एस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड मूवीज़ में डायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। एंड एक नेगेटिव कैरेक्टर को इतना पॉजिटिव दिखा दिया जाता है। जैसे एंड जो मूवी का टाइटल है द लॉर्ड ऑफ द रिंग, जो रिंग है इट मीन्स दिस रिंग इज़ कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। एंड मतलब इतने हिडन साइंस है कि हमको समझ पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड जैसे यहाँ पे एक लेडी का नाम यूज़ किया गया है ग्लेड्रियल, तो ग्लेड्रियल किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। एंड जो ग्लेड्रियल का जो साथ जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, उसको लॉर्ड से डिफाइन किया गया है। तो अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेहुरमती हो रही है। एंड और हर मूवीज़ में मिरर यूज़ होता है, जो कि जिसमें मोस्टली किस लिए यूज़ किया जाता है? जिनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स मूवी में शेप शिफ्टिंग के बारे में जैसे भी आपने देखा होगा, तो शेप शिफ्टर कौन होते हैं? ऑब्वियसली जिन होते हैं। तो लिटरली बहुत ज़्यादा स्केरी है ये। एंड द शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ अबाउट द हैरी पॉटर, जो कि हर एक बच्चे को और हर एक बड़े को बहुत पसंद है। हैरी पॉटर को इस मूवी में एज अ सेवियर दिखाया जाता है। एंड जो जितने भी यहाँ पे एंटी क्राइस्ट को जो शो किया गया वो ऐसे शो किया गया है, यानी कि सेवियर। जितने भी मेन हीरो होते हैं सबको सेवियर रखा जाता है, जितने भी सेवियर होते हैं वो सारी एंटी क्राइस्ट होते हैं इस तरह की मूवीज़ में। एंड उनकी एक जो फाइट होती है एक दूसरे किसी डेविल से होती है। जैसे कि इस हैरी पॉटर में जो डेविल है वो स्नेक है, जो कि जिसको सिम्बलाइज किया गया है डेविल से। एंड वो एक्चुअल में जो होता है वोल्डेमॉर्ट होता है, उसका नेम है वोल्डेमॉर्ट। तो वो उससे फाइट करता है, मतलब हैरी पॉटर की उससे फाइट होती है, वो सबको बचा लेता है, यानी कि जो सेवियर हैरी पॉटर वो बचा लेता है वोल्डेमॉर्ट से। एंड क्या होता है एट द एंड, जो सेवियर होता है उसके माथे पे जिसके फोरहेड पे एक लाइटनिंग स्कार होता है, जैसे कि दज्जाल के फोरहेड पे एक लाइटनिंग स्कार है, तो उसी तरह से यहाँ पे हैरी पॉटर के फोरहेड पे होता है। तो दिस इज़ रियली वेरी हीडियस एजेंडा दैट वी डोंट नो एक्चुअली। जो लाइटनिंग बोल्ट है दैट इज़ द मार्क ऑफ द बीस्ट, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट मीन्स दज्जाल का जो मार्क है। एंड यहाँ पे जो भी मूवी पूरी सीरीज़ है दैट इज़ कम्प्लीटली मैजिक, पूरे जादू से है। जादू जितना भी होता है सब सैटेनिक होता है। तो एंड यही चीज़ें बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं। एंड वैसे भी जैसे कि यहाँ पे नानिया मूवी के बारे में बताया गया है। सो बहुत सारी मूवीज़ जो यहाँ पे कुछ टॉप ऑफ द मूवीज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा
हाईलाइट किया गया है इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल शो सम मोर. सो येस, दिस इज़ अ आई ओपनिंग वीडियो. सो दिस दुनिया इज़ मेरली अ डिसेप्शन एंड नथिंग एल्स. सो आई नो बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शौक है मूवीज़ देखने का, बट मेक श्योर कि आप देखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें. एंड ऑन दी अदर हैंड आई वुड लाइक टू से कि दो चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं चल सकती हैं. लाइक कि इस तरह का सेटनिक कंटेंट भी आप कंज्यूम करते रहें एंड साथ में आप दीन को भी कंज्यूम करते रहें. तो दोनों चीज़ें एक साथ कभी भी रिसाइड नहीं कर सकती, नहीं ठहर सकती. इसलिए at some point we have to give up one thing, whether it's this world or this world. So it's up to you. Well, I love this video. So मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. So अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में.